मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। दिस इज द 35th सेशन ऑफ आवर कैट DILR100 सीरीज। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। एंड दिस इज द सेट फॉर टुडे। सिंपल सेट है। बस क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करना। ईजी होगा, ईजिली हो जाना चाहिए। फॉलोड बाई 5 क्वेश्चंस। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू solve the set yourself first. The set is saying 3 players X, Y, and Z participate in a 3-round tournament with a total budget of 30 tokens each. In every round, each player bid with a non-zero integer number of tokens. Non-zero integer number of tokens, which implies that greater than or equal to 1 tokens are bid by each player in every round. The player that placed the highest bid in a round won that round and scored 3 points. 1 and 0 points are given for the second highest and lowest bids in that round. No two players submitted the same bid in any round, and no player submitted same bid in any 2 rounds. So by the end of the 3rd round, all players exhausted their tokens and no player won more than 1 round. और फिर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है फॉर X, Y, and Z. So there are 3 rounds: round 1, round 2, and round 3. And total tokens given to each of them is 30. And by the end of all 3 rounds, all the tokens are exhausted. So total sum of tokens that they have bid in across the 3 rounds, that is 30 for all of them. Additionally given that X bids 10 and 8 tokens in round 2 and round 3. So 10 tokens in round 2 and 8 tokens in round 3. Y has bid 5 and 15 in round 1 and round 2. And lastly, Z has bid 14 tokens in round 3. Also given that no two players submitted the same bid in any round. So in any round, all the bids are distinct. Additionally, no player submitted same bid in any 2 rounds, which implies that all the bids submitted by a player are also distinct. By the end of the 3rd round, all players exhausted their tokens, so no player won more than 1 round. There are 3 rounds and no player has won more than 1 round, which implies that every player won exactly 1 round. Exactly 1 round. ठीक है, और क्योंकि टोटल हमें 30 पता ही है हर एक रो का, तो यहाँ से we can find out other values also. So for X, 10 and 8 is the number of tokens bid in round 2 and round 3. तो round 1 का वैल्यू क्या आएगा? 30 minus 18, which is 12. Similarly for Y, 5 and 15, तो round 3 का वैल्यू आ जाएगा 30 minus 20, which is equal to 10. So round 10 के लिए exact values हमें पता है, which is 8, 10 and 14 respectively. So highest bid is by Z. So Z must have won round 3. Okay. Now as far as round 1 and 2 are concerned, we are sure that Z has not won any of these rounds. That we are sure about. ठीक है, Z has not won any of these 3 rounds. अब अगर Z ने नहीं जीता है, because Z has already won round 3, so in that case round 1 कौन जीता होगा? Because round 1 में highest bid किसका है? X and Y में higher bid is for X, and definitely since Z cannot win any more round, so X must have won this round 1. And if that is the case, then Y must have won round 2. Isn't it so? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? Which player won round 1 of the tournament? So answer is X has won round 1. Option A is the answer. Clear? Second question was, how many distinct valid cases are possible under the given constraints? तो मल्टीपल केसेस यहाँ पे बन रहे होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, अब हमें Z के लिए पता है 14 tokens Z has bid in last round, round 3. So which implies that in first 2 rounds, total sum of tokens bid by Z will be equal to 16. Because total tokens are 30. अब 16 है, बट हमें ये पता है कि in round 2 tokens bid are 10 and 15 by X and Y. So cannot be the value of Z tokens bid by Z cannot be 15. Similarly, in every round, tokens bid by a person are greater than or equal to 1. So that implies that tokens bid by Z in round 1 will be greater than or equal to 1. So tokens bid by Z in round 2 cannot be 16 either. 16 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, क्या 14 होना पॉसिबल है? Because Z has bid 14 tokens in round 3, तो 14 भी नहीं होगा. Neither 15 nor 16 nor 14. So the first possible value will be 13. Z can bid 13 tokens in round 2, and in that case total is 16 of round 1 and round 2. So round 1 tokens for bid by Z will be equal to 3. So 3 and 13 can be a case. That is a possible case. Next value क्या हो सकता है? 3 13 के बाद में this could be 4 and 12. 4 in round 1 and
12 and down 2. Okay. Next could be 5 and 11, but is that possible? That will not be possible because in this case, Y has already bid 5 tokens in round 1. So Z cannot bid 5 tokens because all bids are distinct in a particular round. Okay, so 5 and 11 is not possible. Next value 6 and 10. 6 and 10 by the same logic will also not be possible because with 6 and 10, already X has bid 10 tokens in round 2. Next value could be 7 and 9. That is possible. 8 and 8 will also not be possible because in that case, Z will be bidding same tokens in both rounds. So 8 and 8 will also not be possible. Next value could be 9 and 7. Then 10 and 6. 11 and 5 will not be possible. No, 11 and 5 possible रहेगा. That is also possible. 11 and 5. Okay. But since we know कि X has gone round 1, so now 11 and 5 12 and 4 वाला case possible नहीं होगा. 13 and 3 वाला case possible नहीं होगा because tokens bid by Z has to be less than equal to 11. So these are the only possible cases, 6 cases in total. To answer for the second question, that distinct value cases will be equal to 6. Total 6 cases are possible. Okay. Now third question, if all players win equal points at the end of the tournament, then what can be the maximum difference between number of tokens bid by player Z in round 1 and round 2? तो हमें पॉइंट्स पे भी फोकस करना है फॉर एक्स वाई एंड जेड इन दीज 3 राउंड्स. अब राउंड 3 वाला पैटर्न तो क्लियर है हमें 8 10 14 यानी क्लियरली राउंड 3 में 3 पॉइंट्स आर गिवन टू प्लेयर जेड. राउंड 3 में 1 पॉइंट इज गिवन टू प्लेयर वाई एंड 0 पॉइंट्स आर गिवन टू प्लेयर एक्स. बट बाकी राउंड्स में ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे आई गेस वहाँ पे भी. So this table of 3 cross 3 is for points in every round. So points in round 3 for x, y and z will be 3 points for z, 1 point for y and 0 points for x. Now 3 points in round 2 are given to y because y has won that round. 3 points in round 1 are given to x because x has won that round. अब 0 और 1 का confusion रहेगा in round 1 and round 2. Okay. So one case could be that y might have gotten 1 point in round 1, and if that is the scenario कि y को 1 point मिले, in that case z will be getting 0 points. But ये case कब होगा कि y is getting 1 point, z is getting 0 points when tokens bid by y are more than tokens bid by z. यानी कि tokens bid by z should be less than equal to 5, which is in first 2 cases. In first 2 cases, when tokens bid by z are either 3 or 4, and if tokens bid by z in round 1 are 3 and 4, then round 2 are 13 or 12. 13 or 12, which is definitely more than 10. More than 10, यानी कि in that case, if y is winning 1 point in round 1, in that case, z is winning 1 point in round 2. For sure, because 13 or 12 case बनता है वहाँ पे, definitely 10 से ज़्यादा है round 2 में. So in that case, in round 2, 1 point will be given to z and 0 point will be given to x. Second scenario could be that y might be getting 0 point in round 1 and z is getting 1 point in round 1. And if that is the scenario, so that implies that tokens bid by z should be greater than 5, which is in next 4 cases. So tokens bid by z are 7, 9, 10 and 11, and at the same time tokens bid by z in second round are less than 10. At the same time tokens bid by z are either 9, 7, 6 or 5 in the second round, which is less than 10, which is token bid by x. And definitely in that scenario, points earned by x in second round will be equal to 1 and that by z will be equal to 0. तो यहाँ पे मेरे पास 2 पर्टिकुलर केसेस बन रहे हैं. फर्स्ट केस, इन दिस केस पॉइंट्स क्या आ रहे हैं एक्स वाई और जेड के. फॉर एक्स पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली राउंड्स में क्या आ रहे हैं 3, 0 एंड 0. फॉर वाई पॉइंट्स आर 1, 3 एंड 1. फॉर जेड पॉइंट्स आर 0, 1 एंड 3. देखिए 3 पॉइंट्स टोटल फॉर एक्स, 5 पॉइंट्स टोटल फॉर वाई एंड 4 पॉइंट्स टोटल फॉर जेड, यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ देम. एंड इन द सेकंड सिनेरियो points for x, y and z are 3, 0 and 0 in the first round. In the second round, that is 1, 3, 3, 0 and 0 नहीं होगा, 3, 0 and 1. 3, 0 and 1, then 1, 3 and 0, and last round is 0, 1 and 3. The total points by x will be 4,
those by y will be 4 and those by z will also be 4, यानी कि all three are getting same points, equal points. 4 cases, ठीक है, 2 cases हमारे बन रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट केस जबकि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज पॉसिबल इन 2 cases. First case is when z is bit 3 points in round 1, 30 in round 2, और second case है 4 और 12 वाला. Similarly 4 cases बन रहे हैं हमारे when there are equal points for x, y and z. Okay, अब क्वेश्चंस देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, if the all the players won equal points at the end of the round and at the end of the tournament, then what can be the maximum difference between number of tokens bid by player z in round 1 and round 2. ठीक है, नंबर ऑफ टोकन्स बिड बाय प्लेयर z इन राउंड 1 एंड राउंड 2 में मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, और हमारा केस कौन सा लेना है, इक्वल पॉइंट्स वाला. सो इन केस ऑफ इक्वल पॉइंट्स either differences of that of 2 between 7 and 9, again 2 or 4 or 6. So maximum difference is when z has bid 11 points, 11 tokens in round 1 and 5 in round 2. So difference in that case is equal to 6. ठीक है, आइडियली यहाँ पे क्योंकि मैंने बाद में क्वेश्चन ऐड किया है, सो एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड होना चाहिए था, ज़्यादा बढ़िया होता. ठीक है, एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड, बिकॉज टूर्नामेंट एंड नहीं हुआ है. इफ इक्वल पॉइंट्स है उसके बाद में फिर एक एडिशनल क्वेश्चन भी है अपना, तो थर्ड राउंड होना चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल प्लेयर्स विन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैलिड केसेस आर पॉसिबल अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स. तो इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट points, we have two possible cases, either 3 and 13 in round 1 and round 2 for Z, or 4 and 12. So there are two possible cases. So answer will be 2 for this fourth question. Okay. Next question करते हैं. Last question of the set. All players win equal points at the end of the tournament. They are given the tokens bid by them from their winning bid to play a round robin of 3 matches in order to find a winner. In this round, each pair of players played one game of bids such that after playing their matches, all their tokens are exhausted. The player bidding the higher number of tokens in a match wins the match. All the bids placed in this round were unique, and X won both its matches, while Y bid 3 tokens in its match against X. How many distinct valid cases in this round are possible under the given constraints? Constraints क्या है हमारे, कि वापस से उनको tokens दिए गए, और क्या token मिले हैं, they are given the tokens bid by them from their winning bids to play a round robin of 3 matches. So X has won first round, and 12 tokens were there bid by X in first round. ठीक है, X has won first round, Y has won second round, and Z has won third round. So 12, 15 and 14 tokens will be given to them after the third round. X, Y and Z, 12, 15 and 14 tokens are given to them. And then they play a round robin of 3 matches, यानी कि 3 matches होंगे. So first match, one match could be between X and Y, X versus Y. One match will be with X and Z, and one match will be between Y and Z. Okay. Then the condition is that each pair of players played one game of bids such that after playing their match, all their tokens are exhausted. Like when X will be placing the bids for 2 matches, total sum of tokens that he is placing for bids will be 12, that for Y will be 15, and that for Z will be 14. Also given that Y has placed 3 tokens, bid 3 tokens in his match against X. So Y का value तो fixed है, 3 tokens Y has bid in his match against X, and if that is the scenario, then Y must have bid total 15 tokens मिले थे Y को. So out of 15, 3 tokens Y has bid in his match against X, so remaining 12 will be bid by Y against Z. और हमें दो मैचेस का रिजल्ट तो पता ही है कि X वर्सेस Y में X has won, which implies that X must have bid more than 3 tokens, greater than 3 tokens, and X versus Z में also X has won. X must have bid more than tokens placed by Z, tokens bid by Z. Y वर्सेस Z में कुछ भी आउटकम हो सकता है, Y कैन विन और Z कैन विन, और हमें टोटल केसेस फाइंड आउट करने हैं, कितने ऐसे केसेस हम फ्रेम कर सकते हैं विद दीज कंडीशंस. ओके, तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, मिनिमम tokens bid by X in X versus Y match, X versus Y match can be equal to 4. ठीक है, 4 पॉसिबल है. क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं X के लिए, इधर X will be bidding 4 tokens in X versus Y match, and then रिमेनिंग कितने बचेंगे, 8 tokens in the other match. 4 and 8 हो सकता है. ठीक है, या फिर 5 and 7 हो सकता है. 6 and 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या करिए, ऑल द बिड्स प्लेस्ड इन दिस राउंड वर यूनिक. लेकिन टोटल जो 6 बिड्स प्लेस हो रही है, X की 2, Y की 2 और Z की 2, तो टोटल 6 बिड्स, ऑल बिड्स आर यूनिक. So in this round, all the bids placed are unique. ठीक है,
ऑल बिट्स प्लेस्ड आर यूनिक। तो 5 एंड 7 पॉसिबल है, 4 एंड 8 पॉसिबल, 6 एंड 6 तो x की दोनों बिट सेम हो जा रही है, so that is not possible. एंड देन 6 एंड 6 के बाद में क्या बचेगा हमारा 7 एंड 5, तो 7 एंड 5 इज ऑल्सो पॉसिबल. 8 एंड 4 ठीक है पॉसिबल होगा. 9 एंड 3, 9 3 नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 बिट्स y ने ऑलरेडी प्लेस की हुई है. एंड देन 10 एंड 2 वुड बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल है कि x 2 बिट्स प्लेस करे, 2 टोकन्स बिट करे और y z 1 कर दे, तो वो भी एक पॉसिबल होगा. अब केसेस बनाते हैं. ठीक है, पहला केस लेते हैं. फर्स्ट केस व्हेन x has bid 4 tokens versus y and x has bid remaining 8 tokens versus z. तो इफ x has bid 8 tokens versus z, तो z कितने tokens प्लेस कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये केसेस पॉसिबल होंगे. ठीक है, तो वन केस कुड बी 1 इन दिस राउंड एंड 11. z के टोटल टोकन्स कितने हैं? 14 है, तो 1 इन 13. दिस कुड बी वन केस. 2 एंड 12 पॉसिबल नहीं होगा z के लिए. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इन दैट केस 12 tokens will be bid by z also, जबकि y ने ऑलरेडी 12 tokens प्लेस किए हुए. 2 एंड 12 पॉसिबल नहीं होगा. बाय द सेम लॉजिक 3 एंड 11 भी पॉसिबल नहीं होगा because 3 tokens has been already bid by y. By the same logic 4 and 10 भी पॉसिबल नहीं होगा because 4 tokens have been bid by x in this round. Okay, और क्या पॉसिबल हो सकता है हमारे पास? 5 and 9. Yes, 5 and 9 is also possible. Now 6 and 8 भी पॉसिबल नहीं होगा because 8 tokens have been bid by x also. तो 6 and 8 भी पॉसिबल नहीं होगा. 7 and 7 इक्वल हो जाएगा, so that is also not possible. And z cannot bid more than 7 because x has won this round. So only 2 cases are possible in the first scenario. If x has bid 4 tokens in his game versus y. So 2 cases possible हो गए यहाँ पे. Second case could be that x has bid 5 tokens. y का तो bids fixed है 3 and 12. तो x has bid 5 tokens, तो यानी कि 7 tokens x has bid against z. तो z के लिए again 1 and 13 is possible. Now 2 and 12 not possible. 3 and 11 not possible. By the same logic, क्योंकि 3 ऑलरेडी y ने प्लेस किया हुआ है, 2 वाला भी क्योंकि वहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, तो 2 and 3 वाला केस पॉसिबल नहीं है. 4 and 10 पॉसिबल हो जाएगा इस बार. देन 5 वाला केस पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इस बार y ने x ने प्लेस किया हुआ है 4 5 अगेंस्ट y, तो 5 इज नॉट पॉसिबल. देन 6 and 8, so yes that is possible this time. 7 and 7 not possible. 8 and 6 not possible because अब 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. दिस इज द लास्ट केस बिकॉज x इज ऑन. नेक्स्ट केस लेते हैं. x has bid 6 in the first round, नॉट पॉसिबल. ये केस ही पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों राउंड में 6 तो प्लेस ही नहीं कर सकता. तो नेक्स्ट केस विल बी 7 and 5. 7 in versus y and 5 versus z. So now 1 and 13 is a possibility. 2 and 12 not possible. 3 and not possible. 4 and 10 is possible. 5 not possible. और 5 से बड़ा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज x is 1. नेक्स्ट हो सकता है 8 and 4. सो z के पास ऑप्शंस क्या है? इट कुड बी 1 and 13. 2 and 12 नहीं हो सकता. 3 भी पॉसिबल है. 3 and नहीं, 3 भी नहीं हो पाएगा. और कोई भी केस इसके अलावा पॉसिबल यहाँ पे नहीं बनेगा. ठीक है, एक और केस हमारा बचेगा लास्ट में 10 and 2 वाला. तो 10 by x in versus y and 2 versus z, और यहाँ पे z का एक ही केस बनेगा 1 वाला. 3 and 12 and 1 and 13. So these will be all our cases. कितने केसेस बने? 2 2 4 9 cases in total. So under these constraints total 9 cases are possible. So the answer for this question will be total 9 cases. क्या ही क्लियर? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने बस केसेस बनाने देखे, हर एक केस में कैसे हमारे अंडर द कंस्ट्रेंट्स कितने केसेस बन सकते थे. सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच, बस इनिशियली थोड़ी बहुत कंडीशंस थी, इनको समझना था और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था. ठीक है, तो आई बिलीव तुम अपने एंड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इजीली हैंडल किया कर पाओगे और क्वेश्चन को करेक्टली तुमने सॉल्व किया होगा. कमेंट में मेंशन करना तुम्हें सेशन कैसा लगा और क्या तुमने अपने एंड पे क्वेश्चन सॉल्व किए इजीली या फिर कहीं पे दिक्कत आई. ठीक है, और फिर भी कहीं डाउट रहता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर मेंशन करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.